have the same sheet, which is the one which is used in MMD, the one which we had sent to you. Everybody's got that sheet only, no other sheet. Yes, sir. Same sheet. All right, same sheet. Great, super. So, so on the sheet, basically, right side bottom, you will find a place where the name is written there, where there is name, right? Yes, sir. Yes, sir. Found it? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Oh, okay. So in the exam, not be writing your name there. In the MMD exam, you will not write your name there because in the MMD, you're not supposed to disclose your name anywhere in any sheet. So do not write your name there in the MMD exam. ERA exam, you can write. There's no problem. But in the MMD exam, please don't write your name there. Okay. Then below the name, you will find scales. So how many scales do you see on the right hand side Two of the scales. sheet? Two scales, sir. Look carefully. Sir, four. There are four scales. Yes, sir. Four. Has everybody seen four scales? Yes, sir. So, right, there are two scales on the top line and there are two scales on the bottom line. So there are four Yes. scales. So if I were to number the scales from top to bottom, right? So if I were to number the scales from top to bottom, then it would be scale number 2. And then scale number 3 and scale number 4. Correct? सर आपका वीडियो बहुत ब्लर है सर. Yes, sir. बहुत I'm. blur है. Yes, एक sir. मिनट. Sir, clearly दिखती है. एक मिनट. एक minute. Let me just log out and then log in. If it deteriorates again, then probably I'll do the same trick once more. अभी clear है? Yes, sir. Clear. Yes. Yes, sir. Now it is clear. Okay. So basically, these are the four scales that you see on your right hand side. 1, 2, 3, 4. So the limitations of 3 and 4, you will always be using either 3 or 4. So 4 is with 6 miles or less. All your targets, because the scale number 4 is 0 to 6. Scale number 3 is 0 to 12. So you'll always be using the largest scale possible. That means 3 or 4. One and कभी भी use नहीं करेंगे. So between 3 and 4 is a choice that you'll make depending on the type of question. Mostly 90% of your cases, it will be 3. So whichever scale you use, you will put a tick mark there. You will put a tick mark there. सर 1 2 3 4 लिख के ऐसे टिक कर देना है ऐसे ऐसे टिक That's कर right. जो भी स्केल में वहां पे टिक मार्क कर दोगे आप. 1 2 3 4 लिख के उस जो भी स्केल यूज करोगे उसके ऊपर टिक मार्क कर दोगे. Okay. So can we Now, use a centimeter scale also? no, you can't use any other scale other than this scale which is provided there. कोई और scale use मत करना. Okay, sir. Because
So because this is the only scale which the examiner will be going by. कुछ और scale use करोगे, you will cause more confusion to the examiner, and therefore there will be more issues to handle. सर और एक और Okay. बात, ये आपने ये बताया कि नेम नहीं निकला है और नीचे डेट वगैरह वो तीनों कॉलम ब्लैंक छोड़ने हैं, राइट? खाली नेम ब्लैंक छोड़ देना, खाली नेम ब्लैंक छोड़ देना. ओके सर. Okay. Question. So let's take a question. Ownership's course. So ownership is WO. Take a question. 340 degrees. True. 15 knots. Target bears as follows: 0800 hours, 040 degrees, range 12 miles, 0812, 9 miles. Question says report the target. Question says report the target. Okay. Which scale would you like to use? Sir, number 3. Scale number 3. All right. So put a tick mark on number 3. Now, target में ये bracket में RR, what does this represent? Sir, relative. 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 तो मुझे इसको relative को क्या करना चाहिए? True. True. True course, sir. How do I do that? How do I do that? Plus 180. Sir, yes. हाँ जी. Sir, adding or हमारी subtracting हेडिंग के from the रिस्पेक्ट heading. में देखना पड़ेगा. Right. So जो Heading मेरा, so my heading is 340. So true bearing is 340 plus 40 will give me 020. Similarly, the second true bearing. This was the first true bearing. Second true bearing will be so my true bearings, two of them are 020 and 017, and this is what I will be plotting. So what we are doing basically is relative plotting of true bearings is what we are doing. We are doing relative plotting of true bearings. This is what we are doing. Okay, is this okay? So basically the center of the circle is ownership, named as Charlie. That is where the ownership lies. Put your roller ruler at 020.
Make sure your ruler is also connected to the other end of the circle, which is diagrammatically opposite. तो एक साइड पे अगर 020 है तो दूसरी साइड पे it will be 200. So make sure वो भी टच कर रहा है. Take the scale as 12 miles. Put your divider at 12 miles or compass at 12 miles and mark a point. Mark a point. Put a circle around that point. First position of the target. Put a time there, 0800 hours. Call that point as O. Call that point as O. So O is the first reported position of the target. Then put your roller ruler at 017. Do the same thing. This time 9 miles range. Put a dot. Put a circle around it. Call it as 0812. Call it, mark it as A. Join OA and extend it up to Charlie. सर स्केल 3 लिया है तो उसमें 12 माइल्स जो सर्कल के बाहर ही आ रहा है. No problem. कोई दिक्कत. The rest of the triangle will fall inside the circle, so it's okay. No issues. Now, your own ship is doing 340 and she's doing at 15 knots. So, on the right side, you will find a speed time distance table. So, go into that table, look at 15 knots, look at interval of 12 minutes, and find out the distance. 3 miles. Sir, 3 3 miles. mile. So 3 miles को ऊपर में आप एक गोल चक्कर लगा दोगे पेंसिल से टू इंडिकेट कि मैंने ये टेबल यूज किया. सो 3 माइल के ऊपर दैट मीन्स जहां पे 3 माइल लिखा हुआ है यू विल जस्ट पुट अ सर्कल अराउंड इट टू इंडिकेट टू द एग्जामिनर कि मैंने ये स्पीड टाइम डिस्टेंस टेबल यूज किया. Sir, can you repeat this table thing? टेबल नजर आ रहा है राइट साइड पे. Yes, sir. तो मेरे को मेरी ओनशिप की स्पीड पर आई एम डूइंग 15 नॉट्स. 12 मिनट में मैं कितना करूंगा डिस्टेंस. Yes, sir. 3 miles. 3 miles. So 3 miles के ऊपर एक गोल चक्कर लगा दो. And now W to O should be 340. So put your ruler through Charlie 340 and transfer it very carefully through O and draw a reverse line.
draw a reverse line. W to O should be 340. That means O should head O and mark 3 miles away on this line. Call that point as W. So W to O is heading 340, 3 miles. Sir, last one repeat. Sir, one. W to O. So basically 3 miles था, तो मैंने 3 माइल मेजर किया एंड जो पॉइंट काटा उसको मैंने W बोल दिया. So W सर to O. ये जो हमें टेबल W टेबल to यूज O करके is 340. W to O is 340, 3 miles off. हाँ जी क्या बोल एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर ये हमें टेबल यूज करना है स्पीड एंड डिस्टेंस का और वी कैन कैलकुलेट मैनुअली आल्सो. कर सकते हो आप कर लो. यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल रहा है तो मैं टाइम बचाने की कोशिश सेम कर ही रहा हूँ. आएगा सर, सेम ही है सर वैल्यू तो. वो तो सेम ही आएगी तो आप कर सकते हो. आई हैव गॉट नो इश्यूज बट आप टाइम ज़्यादा लगाओगे. मैं तो टाइम बचाने का मेरा एम है. आई एम ओके सर. एमिंग सो दैट यू सेव टाइम. अदरवाइज टाइम अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो आप कर लो कैलकुलेट. नो इश्यूज. So W to O, you will put one arrow, single arrow. Join WA, put a single arrow there. And OA, put two arrows. So your triangle is now complete. WOA. सर ये जो OW का 3 माइल्स का मारा ना वो टेबल से कैसे करने को बता देंगे प्लीज. मतलब वो यूज कैसे करना है टेबल का. 15 नॉट टेबल पे देखिए. Look at 15 knots यस सर. and 12 मिनट का इंटरवल. ओके ओके सर. कॉपी. So W to O is ownership for this 12 minute. W to A is the target course and speed for this 12 minute. And OA is the relative line of approach of the target. OA is the relative line of approach of the target. So ये हमारा जो बन गया है. Now from Charlie, I have to drop a perpendicular. From Charlie, I have to drop a perpendicular onto the OA extended line. So how to do that? OA line को हेडिंग देख लो. OA की क्या आ रही है हेडिंग, उसमें से -90 कर दो and that will be the bearing line from Charlie. So therefore drop a perpendicular from Charlie. Call that point as N. Call that point as N. So Cn is your CPA basically. Now I'm ready to start my answer. So reporting the target.
First one, target course is equal to WA. So put your roller ruler on WA and pull it down to Charlie and read off what is the heading that you are getting for Sir, please, WA. so please repeat. Put your roller ruler on WA and bring it to Charlie. So 274. 274. अब ये सबके वेरी करेंगे, अलग अलग आंसर सबके आएंगे. So सर it is okay. सर कितना So वैल्यू ये तक सब डिफरेंस चलता है सर? देयर इज नथिंग, इसमें कोई वो ऐसा है नहीं कि कितना तक चलेगा और कितना नहीं है, क्योंकि here you just have to be, you have to try and this thing. So like for example, the answer to this is 273. So if somebody is getting 269, that is also okay. If somebody is getting 274, that is also okay. 274 here. So 276. 276 is also okay. So only thing is you have to 271. try. That's also okay. So you have to try and minimize your error. How do you minimize your error? Put your roller ruler in the center of WA and then you transfer it. इसको सेंटर में डालो, राइट, मेक श्योर. और जब इसको पुल करोगे नीचे तो इसको यहाँ पे पुल करो. ट्राई टू मिनिमाइज योर एरर, बिकॉज जैसे ही ये घूमेगा हल्का सा भी या पेपर घूमेगा तो यू गोना हैव सम इश्यूज. सो यू हैव टू लुक एट वेज एंड मीन्स कि ये मेरा पेपर हिलना नहीं चाहिए. सो ट्राई एंड कीप योर पेपर. Sir, 272 आ रहा है sir. That's okay. That's fine. So that is your first one. Next, target speed. Now measure WA. Measure WA. And supposing आपका आता है 2.5 miles. 2.5, 2.6, whatever. So now you can go back onto the same table and go ulta this time. And from a distance of 2.5 or 2.6, for an interval of 12 minutes, calculate the speed. 13 Going ulta. knots. 13 knots. 13 knots. Right. So now the answer is 12 and a half knots as far as I'm concerned. Somebody is getting 13, that is okay. Somebody is getting 12, that is also okay. Sir, please repeat, sir. You measure your WA distance. Measure your WA distance. Go back to the same table. अब उल्टा घुसेंगे हम. मेरे को डिस्टेंस पता है, मेरे को ड्यूरेशन पता है, इंटरवल 12 मिनट का, तो उल्टा जा रहा हूं मैं स्पीड की तरफ एंड स्पीड निकाल रहा हूं और वो स्पीड के ऊपर सर्कल कर दूंगा गोल चक्कर कि ये मैंने यहां से निकाली है स्पीड. 13 नोट. ये सर 12.5 है. जो whatever you're getting, जो भी आप लोग कर रहे हैं. So that's your target speed. Third, सर स्पीड वाला नहीं समझ लगा, प्लीज दोबारा बता दो. मुझे टारगेट की स्पीड चाहिए. इतना डिस्टेंस मेरा टारगेट 12 मिनट में करता है, 60 मिनट में कितना करेगा. सो
तो सर इसको स्केल में ढूंढना है या कैलकुलेट करना है 2.5 को? अगर आप स्केल से ढूंढ सकते हो, ये डिस्टेंस है और 12 मिनट का इंटरवल है, तो स्पीड पे चले जाओ। तो टेबल से भी निकाल सकते हो आप, जो आपको ज्यादा आसान लगता है। टेबल आपके लिए रेडीमेड है। सर अगर टेबल में मान लीजिए इंटरपोलेशन करना पड़ता है तो फिर हम किसको सर्कल करेंगे सर एग्जाम में दिखाने के लिए? दोनों को ही कर देना, दोनों को करके वहां पे बीच में ओके इसकी वैल्यू दे देना। ओके सर, थैंक यू। सर सीपीए सर्कल इसको करना है ना, जो हमारी स्पीड आई है, जैसे जैसे 12 जो नॉट्स हमारी है, 60 नॉट आई है, उसको जो भी सर्कल आ करना रही है स्पीड, उसको सर्कल कर दो। है। ओके सर, थैंक यू। CPA is CN, so measure CN on the same scale and उसका डिस्टेंस निकाल लो। 1.8. यहाँ पे 2.35 2.35 तो एक मिनट, लेट 2 मी miles. चेक। 1.7. 1.8 सर। 1.8 sir. लेट मी जस्ट चेक, इसमें 1.9 दिया हुआ है। 2 मिला सर, 2। सो किसी का 1.8 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, 1.7 आ रहा है, 1.8 आ रहा है, ऑल इज ओके। So is CPA okay with everybody? Next is TCPA. TCPA is the last reported position 812 plus distance to go, that is AN, divided by distance relatively traveled OA into common interval, that is 12 minutes. Please remember, numerator and denominator. ये numerator है, ये denominator है. Numerator and denominator must be parallel lines or parts of same line. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो पैरेलल लाइन होनी चाहिए या एक ही लाइन का पार्ट होना चाहिए, और पार्ट्स ऑफ द सेम लाइन। ठीक है, आगे जाके हम बहुत सारी ऑल्टरेशंस करेंगे। जब हम मल्टीपल ऑल्टरेशंस करेंगे तो ये लाइन हमारे लिए बड़ी कॉमन होगी, ये हमें याद रखना है, इनको यूज करेंगे। सो this will be 812 plus 8.8 divided by 3 into 12 minutes is equal to 0812 plus 35 is equal to 0847. So my TCPA is 0847. ठीक है, is this okay? Yes.
सर 0846 सर ये एग्जामिनेशन में ये सारी सर टारगेट रिपोर्टिंग विल बी रिटन ऑन द प्लॉटिंग शीट और इन द आंसर शीट। आंसर शीट सब कुछ प्लॉटिंग शीट पे खाली बस ये डायग्राम होगा, बाकी सारी कैलकुलेशन जो होगी सारी की सारी आंसर शीट पे आएगी। ओके सर। नथिंग, नो कैलकुलेशन शुड बी शोन ऑन द प्लॉटिंग शीट, एवरीथिंग ऑन द आंसर शीट। नॉमेनक्लेचर यही रहेगा, एरो का डिस्ट्रीब्यूशन भी यही रहेगा, सब कुछ ये स्टैंडर्ड है। फिफ्थ, एस्पेक्ट। ये ओरल्स के लिए भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि व्हाट इज एस्पेक्ट। So basically it is the relative bearing of ownership from target's ship's head. How do we calculate it? So first is bearing of A from Charlie. That is bearing of A from Charlie is the last reported bearing. That is 017. Reverse this bearing. So therefore bearing of Charlie from will be plus 180. It will become 197. This is the bearing of Charlie from alpha. 197. Target course, that is WA, which I found out was 273 degrees true. Difference of the two fellows will give me aspect. Difference of these two fellows, whichever is greater, will give me aspect. So 17, 13 minus 7 is 6. Now I have to name it. So for naming, there are two ways to do it. How to name it? One is put your cell phone Charlie on your heading of 340. Target is coming like this. At night, what light of the target will you see? red. Red. So therefore, red. So aspect सर ये is वाला एक बार 70. फिर से बता दीजिए सर। Put yourself on Charlie and put yourself on your own heading 340. Target is at alpha, heading WA. So at night, what light of the target will you see? रेड सर। Red. If target was headed like this, then it would have been ग्रीन। So basically, रात को टारगेट की कौन सी लाइट नजर आती है उससे पता चलता है एस्पेक्ट ऑफ द टारगेट। राइट।
सो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी बताऊं कि ना बताऊं, बिकॉज उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग। बता दीजिए सर। बता दूं? बता दीजिए सर। ओके। दूसरा तरीका है, पुट योर सेल्फ ऑन द ब्रिज ऑफ द टारगेट। गो ऑन द ब्रिज ऑफ द टारगेट। ऑन विच साइड डज योर ओन शिप लाई? Port side. Port side. Correct. ठीक है? Is this okay? There are two ways to nomenclature for aspect. One is put yourself on your own. Second is put yourself on the target's bridge. Both will give you the same answer. Depends which one you are more comfortable with. Sir, if it is a oral question, then without drawing we cannot make out, no sir? If it's an oral question, then the question will first ask you what is aspect, definition of it, and then the next question immediately following that will be how do you calculate it using plotting. So you have to describe the procedure. ठीक है? Is that okay? Is aspect clear to everybody? Yes, sir. Okay. Yes. Sir, other way to measure aspect is join the target course and the true course of our own ship and measure the angle between them. Then we can also get the aspect. तो अब यहाँ पे आके गलतियां शुरू हो जाती हैं फिर। Just इसलिए मैं asking, sir. वो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन अब वो यहाँ पे गलतियां शुरू हो जाती हैं फिर। Okay, sir. सो बेसिकली अगर आप जब जाते हो और चाह रहा मोर इन्फॉर्मेशन, सो आई कैन गिव यू। सो मैं WA को ऐसे एक्सटेंड कर दूं और मैं यहाँ से चार्ली को एक लाइन खींच दूं, तो ये एस्पेक्ट है। बट मैं ये सिखाता नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू टीच दिस बिकॉज दिस इज ड्राइंग chart paper which I don't want to, because I want to keep this area free for more of your alterations आनी है and all that. तो मुझे इसको फ्री रखना है इस एरिया को। Okay, sir. Okay, sir. बट ये एस्पेक्ट है, ये एंगल। तो सर ये एस्पेक्ट हमें ड्रॉ नहीं करना है ना शीट पे? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो सिखा ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ये एरिया खाली चाहिए, क्योंकि अभी मेरी बहुत सारी और ड्रामा होने वाला है एंड ऑल्ट्रेशंस होंगी, तो फिर ये एरिया मुझे फ्री चाहिए। आई नीड दिस फ्री। Sixth and the final thing, that is describing the situation. What is the situation? Basically, I am heading 340 at Charlie. Target is heading 273. It's a crossing situation. And who's passing ahead of whom? So one vessel passing ahead. Target is passing ahead. Target is Correct. passing ahead. So it's Yes, sir. Target is passing. so crossing situation with target crossing from starboard to port. Crossing situation with target crossing from starboard to port, passing ahead.
of ownership. So target मेरे से आगे से जाएगा. This is known as the sixth item of reporting the target. That is also known as describing the situation, also called as how is the target drawing. How is the target drawing? The target is going to pass ahead of me. If this line was passing astern of me, then I would have been passing ahead of the target. I would have been crossing ahead. So can you explain number 6 again, sir? It's a crossing situation. The target's relative line of approach मेरे हेडिंग से आगे से जा रही है. मेरा हेडिंग ये रहा 340. तो relative line of approach मेरे आगे से पास हो रही है. तो target is crossing from starboard to port, passing ahead of ownership. Okay, sir. अगर ये लाइन मेरे पीछे से जा रही होती, then I was crossing ahead of the target. So all these 6 items together constitute what is called as reporting the target. So generally exam में 6 के 6 नहीं पूछे जाते. You can be asked 2 or 3 things out of this. 2 या 3 चीजें पूछ लेते हैं. Aspect is a very common phenomena. You have to show the full working of the aspect to get the marks of it. ये पूरी वर्किंग ऐसे दिखानी पड़ेगी. स्ट्रेट अवे आंसर नहीं लिखना. हाँ जी, एनी डाउट सो फार? No, sir. Any doubt? So ये बेसिक स्टैंडर्ड है. अब इसके बाद में we will be going into various this thing. So अगर टारगेट ऑल्टर कोर्स करता है, अगर टारगेट ऑल्टर कोर्स करता है तो WA will become WA1. अगर ओनशिप ऑल्टर कोर्स करती है तो WO will become WO1. ठीक है? Is this okay? Yes. All right. सर ये एस्पेक्ट मतलब कि अगर मैं टारगेट शिप पे खड़ा जाऊं तो मैं किस तरफ हूं और कितने डिग्री हूं, वही निकालना है ना. अगर मैं टारगेट शिप के ब्रिज पे चला जाऊं तो ऑन विच साइड ऑफ, तो मतलब हम कौन सी साइड में है वो रेड ग्रीन उस हिसाब से आ जाएगा और कितने डिग्री है उस हिसाब से वो फिगर आ जाएगा. दैट्स राइट. ओके. बेसिकली रेड और ग्रीन की नॉमेनक्लेचर में ही मैक्सिमम जो है उसको सोचना पड़ता है. बाकी तो सारा ये मैथमेटिकल है. ओके, ठीक है. सो टुमारो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर विद द ऑल्टरेशंस. अब ऑल्टरेशंस शुरू हो जाएंगी. नाउ द ऑल्टरेशंस विल स्टार्ट. मल्टीपल ऑल्टरेशंस विल हैपन एंड हमारे सिलेबस में है up to 3 targets. So handling, we'll have to handle 3 targets. This thing. So that means that much speed we'll have to practice and get. ताकि हम 3 गुना, because हमें 3 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे. We'll have to make 3 triangles, so 3 targets होंगे. So that will of course be a final day पे हम वो करेंगे प्रैक्टिस उसकी. पहले तो इसकी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि इसके प्रोसीजर्स हमें सब समझ आ जाए.
Okay, basic idea is कि we have to crack this question. ये कंपल्सरी क्वेश्चन आता है नैवेट्स के पेपर में, एंड किसी भी हालत में 25 नंबर लाने चाहिए हमारे. वी हैव टू गेट 25 मार्क्स ऑन दिस, एंड न्यूमेरिकल होता है. सो therefore the amount you practice over the next these 2 weeks that we are going to do, that will matter a lot. सर क्वेश्चंस आरओसी की बुक से दे रहे हैं क्या सर? क्वेश्चंस मैं आरओसी की बुक से, बट उसको वेरी करता जाऊंगा, उसमें वेरिएशंस एग्जाम की डालता जाऊंगा. तो अभी तो यस यू आर राइट, अभी मैं आरओसी की बुक से ले रहा हूँ. अभी तो क्योंकि बेसिक ही करा रहा हूँ राइट नाउ. हमने आरओसी कोर्स भी एकदम जब किया था तो किया था, और किस तरीके से किया था वो भी हम सब जानते हैं. तो ठीक ठाक ही किया था सर, ठीक ठाक कर लिया था, मास्टर ने करा दिया था. अच्छा, ठीक ठाक कर लिया था तो फिर बहुत अच्छी बात है. तो चलो देन इट विल बी इजियर. बट what I have seen majority of this thing is a lot of things are forgotten, and काफी कुछ भूला जा चुका होता है. So that is the basic what I have seen. So let's see how it goes. So tomorrow we'll catch up on this. We'll progress from here. Okay. See you. Bye. Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू सर. Bye.